Ali Fazal, welcome on Bollywood Hungama. Thank you. Thank you so much for having me. It's been a long overdue meeting. It's been really long overdue. So I recently saw the first season of Mirzapur, and मुझे पता नहीं था कि यार ये why are people so crazy about it? I had no idea. Once I saw it, I came to realize that why they're crazy, because it's such a world that totally captures your mind. Second thing is that मैंने कभी ऐसे आपको imagine नहीं किया था. मैंने आपको इतना beefed up कभी imagine नहीं किया. Yeah, even मैंने भी नहीं किया था. But yeah. Can we say that Mirzapur is your शोले? मतलब आप मुझे बहुत glorify कर रहे हैं. नहीं, मैं glorify नहीं कर रहा हूँ. But you know, the fact is the level of reach that the series has, and the sort of curiosity which is there around season 2. मैं एक आपका interview देख रहा था और वो उन्होंने एंकर ने कहा कि that ये बाहुबली 2 टाइप का वेट चल रहा है आप लोगों के लिए. हाँ, ऐसे कुछ हो रहा है वो तो. It's I think the whole country is waiting for it. It has been a big, I think, big game changer for me. I can't deny that. Also क्योंकि that perspective has changed, right, of what I may be able to bring to the table. क्योंकि क्या होता है कि we are perceived from what we have done in the past and not what we can do in the future. For that you need an eye, and I think that is something somebody somewhere saw, and and I'm here talking to you. Even the perception that people had about you was that there's this cool and suave guy who speaks polished English, doing school and the works. And when you're speaking that language and with that typical accent, I believe आपके मामू से आपने शायद वो accent भी शायद लिया है, or someone in your family that you've taken. Even the accent is something which is so unlike you, and that accent, it becomes part of the system of whoever is watching it. There's a slight lisp as well, right? Yeah, there are. It's actually a twang. It's not a lisp. वो जब आप round करके बात करते हैं ना कोई चीज कि इधर आओ और एक होता है इधर आओ, तो वो थोड़ा सा sometimes like it sounds a little, वो एक अजीब सा एक flavor मैंने उसमें डाला था. I think वो एक अंदाज है जो कुछ लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनसे लिया था मैंने. तो मेरे मामू का एक है लहजा है थोड़ा सा, तो I tried to use that and mix it with that with the area of मिर्जापुर. क्योंकि क्या है हमारे यहाँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ काफी दफा कि हर 100 गज पे हमारा तो डायलेक्ट बदल जाता है. तो मेरा लखनऊ से ताल्लुक होना कोई मायने नहीं रखता है when I'm actually performing something that is towards बनारस side, आजमगढ़ और इस पूरे इलाके में मिर्जापुर में. तो वो थोड़ी चीजें, छोटी चीजें थी जो, but that was also big major credit that goes to Puneet Krishna and Gurmeet, but mainly Puneet Krishna for the dialect, because वो एक हमेशा सेट पे रहते थे. So he's always helping you कि कभी जैसे मैंने गलती से भौकाल बोल दिया, अब वो भौकाल लखनऊ साइड होता है लेकिन वर्ड भोकाल होता है बनारस में. छोटी सी मात्रा का फर्क है वो. तो मैं उनको कहता था कि वो चीजें आप देख लीजिए, वो मुझे बहुत, क्योंकि मुझे खटकता है, नुक्ता खटकता है, क्योंकि हमारे यहाँ ना ज और ज जिस तरह फर्राटे से चलता है हमारी सोसाइटी में आजकल, वो मतलब कोई ध्यान ही नहीं देता है उस पे. आजकल तो हम मतलब शू शाह कुछ भी बक दो चलेगा. I'm sure that there have been like hundreds and thousands of memes on Mirzapur. The moment I saw that portion when you say कि मिर्जापुर को अमेरिका बना देंगे, in terms of the guns and all that, so it's like a killer line. It's an absolute killer line. What is your favorite dialogue or maybe from season 1? मेरा एक डायलॉग, मतलब मुझे वो बहुत पसंद आया था, वो जो हॉर्न वाला है, जो मैं उसको मारता हूँ कि वो यार तुम, क्योंकि ये हमारी सब पूरी जनता की दुखती रग है ये हमारी इंडिया में, कि कोई ना, जब आप ट्रैफिक में फंसे हैं, कोई पीछे ऐसे पॉ 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 बजाया जा रहा है, और मतलब इट्स अ मेंटल ट्रॉमा टू गो थ्रू दैट, बिकॉज वी डोंट पेशेंस नाम की चीज नहीं है. तो वो मेरा एक उसमें डायलॉग था. आई थॉट इट वाज रियली apt.
one of my favorites. I think एक defining moment जो season 1 में था जब वो अपनी माँ के साथ में आप बगल की परचून की दुकान पे जाते हैं and Yeah, वो जो that was दुकान another का one. जो ओनर है so he's so terrified कि वो कि एक महीने का नहीं एक साल का आपको हम राशन मिल जाएगा हमारे वहाँ से and then after that गुड्डू भैया he just goes in the middle of the street and वहाँ पर वो दंड बैठक टाइप का वो लगा रहे हैं and then he just fires in the air that element of pride. I think a lot of gangsters they become gangsters not because of money or anything but because of the fun element of it maybe. um, how was that moment for you? Because you know he's not someone who's supposed to be intelligent. He's someone who goes Yeah, by the moment. He lives yeah. for the moment. It's, you know, that's very interesting what you said right now, and that's how the character is. You know, his moments are linked from the previous moment. So this sparks the Yeah. next, and that sparks the next, and that sparks the next. So जब वो ग्रोसरी शॉप पे कर रहा है और ये सब कॉन्वर्सेशन हो रहे हैं, उसके दिमाग में आता है कि ये समथिंग हैज वर्कड, हिज पावर हैज वर्कड, देयर इज रिस्पेक्ट जनरेटेड, एक ट्रांजैक्शन हो गया ना दो एनर्जी का, रिस्पेक्ट जनरेट हो गई माँ के लिए बिकॉज ऑफ व्हाट ही जस्ट डिड, हिज धमकी, पावर एडेड, एंड देयरफॉर सडन स्विच की, ये तो फिर मैं इस इलाके में भी बता सकता हूँ, मुझे अनाउंस करना चाहिए, ये मेरी एक वो है, यू नो, लाइक सुपर ह्यूमन चीज है वो. धीरे धीरे the same thing starts to become bigger and bigger and bigger. Of course that time it's just one little area where he, you know, announces that him and his brother are the undisputed you know, people and the saviors of that town. लेकिन उसके बाद slowly it starts to, it's like they say, right, power corrupts, and absolute power. Okay, now when it comes to season 2, it's very apparent that why people are waiting so eagerly for the season 2 because the way the season 1 ends, it's like I think one would want to see what happens immediately. It is such a deadly way to end it that it's very easy to understand that why people want to see it so eagerly. Now, many a times it happens that one season it does very well, but maybe the second season does not live up to that expectation. Do you guys have any apprehensions on that front? I think it's absolutely natural to have that apprehension. You know, we all do. Season, especially because मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि सीजन 1 के टाइम पे क्रिटिक्स होते हैं और ऑडियंस होती है. सीजन 2 के टाइम पे ऑडियंस भी क्रिटिक हो जाती है क्योंकि अब आप सब साथ चल रहे हैं. So you are up to speed with the story. You are up to speed with the quality. So now you want something at par and even better to top that. So, and I feel like Gurmeet, and especially Gurmeet and Puneet and Mihir, they've managed to keep the, even though the emotions are very high, the stakes are very high, but they managed to keep the flavor of Mirzapur sort of alive through season 2. You know, of course, I've shot my parts and I can't speak for the whole show right now because I haven't seen it. But I think there is some fun stuff still there, and there's, you know, of course there's high drama and intense stuff you'll see this time, but the choices are very different and that's what I like. हमने ज़्यादा उसको इंटेलेक्चुअलाइज नहीं किया कि क्या होता है. हमने देखा है कभी कभी लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और सीजन 2 में जाके सब हक देते हैं, एंड बहुत शोज के साथ हो चुका है, बहुत मूवीज के साथ हो चुका है ऐसा. सो आई थिंक या लिटिल प्रेशर तो रहता है, लेकिन मजा आया. आई थिंक दे क्रिएटेड एन, honestly मिर्जापुर का शूट is anyway a lot of pressure. It's just it's a मतलब it's a problem. मतलब shooting so many hours outdoors होते हैं mostly on, you know, actual sets. उसके ऊपर मुझे जिमिंग करनी होती थी, you know. सीजन 1 में तो चलिए कुछ और ही था, 2.5 घंटा रोज हो रहा था. सीजन 2 तब भी it's still more cerebral for me and physical both. तो थोड़ी सी वर्कआउट में थोड़ा सा लीनियंसी थी तब भी मुझे, लेकिन रोज जाना पड़ता था जस्ट टू कीप दैट साइज, यू नो, मेंटेनिंग फॉर द पार्ट. Okay, and now I saw one of your interviews and you said that you've not seen the entire season of Mirzapur season 1. So have you seen it now? You still have? No, I mean I've seen it in parts here and there. वो कहीं ना कहीं निकाल के जैसे 2 एपिसोड देख लिए या कहीं, बट वो एक गो में मैंने कभी नहीं देखा.
Oh, but I think that's not anything against the show. I love it. I think it's great. It's Even your movies, as I an think some of the movies you've not seen. because as an actor I feel I'm my biggest critic. मैं अपने को मेरे 2 दिन घुस जाते हैं, फिर मैं 2 दिन लिटरली मैं ना आइसक्रीम का एक डिब्बा लेके बैठ जाता हूँ और मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ, मैं फिर ठूसता रहता हूँ तो so I think I just avoid that trauma, but now I watch here and there. Dubbing में तो देख ही लेते हैं हम लोग, and जो भी थोड़ा बहुत होता है इधर उधर. Yeah, I know generally the premise. But do you think that it's a good idea to maybe be slightly detached in a way from your work? It's not that you don't take your work passionately, you do, but at times actors they tend to get too obsessive about everything that they're doing, and maybe a bit of detachment is something that that keeps them, because it's many a times it's what you're looking forward to doing next rather than looking back. Yeah. I mean, if it's about detachment you're talking about, then yes, we need that. We need that, especially in our lives. We guys are very vulnerable people, right? So it's very easy for us to latch on to something that seems good, and the moment we start looking good, ye aise hi hona chahiye, and we get attracted to that, and we get latched onto that. But we have to constantly keep breaking and reinventing and breaking and reinventing, and that's how हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी. I feel I constantly have to go back to basics. Every time I feel I've done a great show or a great scene, even one scene also, I go back. I have to center myself. uh, I mean, I might sound very very wise or anything, I'm not, but I just feel कि थोड़ा जरूरी है. कुछ नहीं तो छुट्टी ले लो. हम छुट्टी नहीं लेते हैं. पहले मेरे आइडिया छुट्टी का होता था कि शूट पे जाने को मिलता है बाहर, but that's not छुट्टी. Mentally we are still in work mode, and I think I realized that very recently in life, that just छुट्टी लेना, even if it's 2 days, is very important to be able to just get away. I saw one of your interviews where you were asked that आपकी फिल्म आ रही है तो उसको क्यों देखना चाहिए टाइप. So you said कि that options हैं, जिसको जो देखना है वो देख सकता है. मैं किसी को ये नहीं बोलूँगा कि वो, this is something which I've noticed in Amir Khan and Shah Rukh and Salman as well. They never say that हमारी फिल्म की USP क्या होती है. अगर उनसे पूछा जाता है तो they get a bit pissed off. They are like कि जिसको जो देखना है वो देखे, और हमने ये किया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप आके देखिए उसको. बस यही तो है. तो अगर विजडम की बात है तो मेरे ख्याल से कुछ आप सही नक्शे कदम पे आप चल रहे हैं. ये लोग तो दिग्गज लोग हैं, मतलब ये लोग ये खेल चुके हैं, एंड दे मेड सम ग्रेट सिनेमा. लेकिन बट बात बिल्कुल सही है. मैं यही कहता हूँ कि भाई अच्छा लगे तो देखो, नहीं है तो आजकल तो और भी बल्कि डेंजरस हो गया हम लोग के लिए. वी आर वन पॉज बटन अवे फ्रॉम रिजेक्शन. तो आपको नहीं अच्छा लग रहा है, यू कैन प्रेस अस अवे एंड मूव एंड स्वाइप, मूव टू द नेक्स्ट शो, एंड इट कुड बी गेम ऑफ थ्रोन्स और व्हाटएवर, सम हॉलीवुड जो भी है, और अ मूवी. Tell us the journey of season 2 for Guddu Bhaiya. That was hard. It was a bit of a lonely one, क्योंकि इस दफा कुछ किरदार नहीं थे, कुछ दोस्त नहीं थे. Why I say lonely is not because मतलब विक्रांत के साथ एक अच्छी टीमिंग हो गई थी मेरी, तो जुगलबंदी चलती रहती थी, एंड एक्टिंग का बोझ भी थोड़ा सा बढ़ जाता था. तो इस दफा अपनी टीम में थोड़ा सा एक वो लगा. लेकिन फिर श्वेता इज देयर. आई थिंक she's her character has been really juiced up. Harshita's character who plays my sister Dimpy. Lekin for me the prep was, the good part is with this that we had shot season 1, and season 1 acts like a virtual memory. कि ये scenes हो चुके हैं, ये events हो चुके हैं for the character in season 2. But my take on this was, I told Gurmeet this. I said there are 10 ways that an actor could play this. एक आदमी की लाइफ में एक ट्रेजेडी होती है, उसकी आधी फैमिली वाइप आउट हो जाती है उसके आंखों के सामने. हाउ डज ही रिएक्ट? Either he could not go into violence, he could run away, he could turn totally crazy, he could only have revenge on his mind or something else. So I just took that little decision कि वो थोड़ा सा उसकी एक he starts to use his brain a little. वो एक like I said this earlier, that he's a lazy man, he's not dumb. He's always been lazy because his father's a smart lawyer, his mother is a genius type woman,
थोड़ी सी किसकी sister is very smart, brother was a smart guy, the apple doesn't fall far from the tree, right? So this boy was just lazy, वो अपना मतलब बॉडी बिल्डिंग में घुसे हैं और संजय दत्त फैंस जैसे होते नहीं थे अपन मतलब छोटे शहरों में पढ़ाई वढ़ाई में कोई वो नहीं है, बट नाउ मजबूरी में कितनी चीजें करनी पड़ती हैं हमारे देश में, तो मतलब ये अगर किसी को नहीं पता है तो मतलब ये किसी को पता है तो हम ही लोग को पता है ना कि आउट ऑफ बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस थिंग्स पीपल मेक अस डू ऑड जॉब्स। मैंने कितनी की है मतलब अपनी स्टार्टिंग में सिर्फ पॉकेट मनी कमाने के लिए, कॉलेज में जब थे कॉलेज की फीस भरनी होती थी, तो लाइफ पुशेस यू टू यूज योर ब्रेन एंड मैं ज्यादा उसको इंटेलेक्चुअलाइज कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ किया है। How tough was it for you to just get into this expletive zone? Apparently, your father was told you that ये थोड़ा सा गालियाँ थोड़ी सी ज़्यादा थी. कुछ लोगों ने मतलब उसको पसंद किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। यस, आई डू फील ज्यादा थी, बट उस इलाके में मतलब लोग प्यार से बात करते हैं तो भी गाली देते हैं। अब वही चीज आप थोड़ा सा दूर उत्तर प्रदेश में लखनऊ की तरफ आएंगे तो आदमी बुरा मान जाएगा कि आप तू तकार करके बात कर रहे हैं, आप मतलब ऐसे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। वो फिर अब उसको मैं कैसे जस्टिफाई करूँ? वो एक शो में था, बट इस दफा मैंने ट्राई किया है फ्रॉम माय ओन लिटिल फॉर माय ओन लिटिल सेटिस्फैक्शन। मैंने जहां जहां मुझे जरूरत नहीं थी, आई थॉट इफ आई कैन कन्वे दैट विदाउट really voicing, I'll try. When I'm talking to you, I must tell you that there were several surprising moments because क्या होता है many times film industry में actors को stereotype कर दिया जाता है कि वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है। जो आपका वो moment है जब आप शुक्ला को मारते हैं, yeah, and the way you are holding the gun, that's like Sanjay Dutt, and that's something that it's very difficult to fathom that Ali Fazal will be doing it, and it looks so convincing. Like that moment, अगर वो आप किसी सिनेमा हॉल में देखें, तो वो सीटियों वाला मोमेंट। हाँ, वो बहुत मतलब उस शूट के दिन बहुत भसड़ हो गई थी, मतलब कुछ कोरियोग्राफ नहीं था, किसी को कोई आइडिया नहीं था क्या करना क्या है। आई रिमेम्बर वो थोड़ा सा टफ था, मैं बहुत अनहैप्पी था उस दिन कि मैं यार कुछ अच्छे से शूट नहीं किया, कोरियोग्राफ करके नहीं किया। So which is why I used suddenly all these surprises that you see. But I suppose it worked. Okay, Death on the Nile is releasing. So looking forward to that. Death on the Nile. Yeah, it got delayed to Christmas, which is even better for us because it's a worldwide release and in a lot of countries. मेरे लिए बहुत बहुत अहम फिल्म है क्योंकि एक तो आगाथा क्रिस्टी है। आगाथा क्रिस्टी के साथ मेरा मतलब बचपन से ताल्लुक रहा है। मेरी वालदा उनको बहुत शौक था, मेरी मदर को सारी किताबें आगाथा क्रिस्टी की पढ़ चुकी थी। तो और मैंने कभी नहीं पढ़ी, मैं लिटरली कमरे में भरी रहती थी उनकी किताबें, पीजी वुडहाउस, अगाथा क्रिस्टी और फलाना, मतलब एंडलेस राइटर्स, लिटरेचर का भंडार है। फर्स्ट बुक मैंने पढ़ी डेथ ऑन द नाइल व्हिच वाज ऑन दिस सेट बिकॉज़ केनेथ ब्राना गेव इट टू मी एंड आल्सो बिकॉज़ आई एम एक्साइटेड बिकॉज़ इट्स आई एम नॉट प्लेइंग एन इंडियन, it's a British role, it's a British character, it's the original film, it was played by George Kennedy, a white man, and it was Uncle Andrew, this time it's Cousin Andrew, so the cast is younger and it's a fun cast. I mean, I'm sure you've seen the diverse cast we have this time, so glad to be part of this franchise. So I think you can easily pass off as like a European or American. मैं आपका एक इंटरव्यू भी देख रहा था वहाँ पर हॉलीवुड का, तो उसमें आप एक्सेंट में भी बोल रहे थे आप, तो वो सब तो oh god, it did not look pretentious, it looked natural, so it was fine, absolutely. Okay, आपने अभी अपनी वालदा के बारे में बात करी. I'm sure that it must have been, I think, a huge loss for you, and I think she's going to be there forever. I believe that you really looked up to her. I've spoken to people who knew her, and they have only great things to say about her. I mean, yeah, she was a big major figure in my life. I don't know, but जब वक्त अच्छा होगा तो मैं ना बहुत बहुत बातें करूंगा उनके बारे में, बहुत चीजें सीखी हैं. You're also playing the lead in Code Name Johnny Walker. Yes, yeah. It's a lead role then. Okay, so maybe
maybe the biggest role that you're having, maybe like in a Hollywood film till now? Yeah, I mean, it's Abdul like and Victoria and Abdul. Yeah, that was the mm, biggest. This is, of course, also mm, again, it's a biopic, and it's based on this man and his life. So I'm playing the man, uh, who is nicknamed Johnny Walker, and mm, या तो उस पे थोड़ी सी अब उस पे ज़्यादा इसलिए चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी पूरी टीम लॉक नहीं है. आई थिंक नेक्स्ट ईयर एट सम पॉइंट वील स्टार्ट वंस आई फिनिश. आई थिंक 2-3 कमिटमेंट्स इंडिया में है. ये एक mm, दफ़ा पहले भी न्यूज़ में मैं आई थिंक आ चुका है या शायद आई डोंट रिमेंबर. But the writer is very good. Alan Venkus is the writer. He wrote Straight Outta Compton. I remember I saw your this thing also. When the news came out and so you tweeted. I'm looking forward. Let's see. It's a huge transformation because it's a total army role, and it's going to be a war film. So, right. war. Apparently, you were also offered um, to be there on Broadway, but you couldn't do it for some reason. नहीं ये बिना पता नहीं क्या दो चीजें किसी ने बोली थी अभी इंटरव्यू में कि मैंने होमलैंड रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ Mm, सम डेट्स इन इंडिया. ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था. दे आस्क यू फॉर डेट्स बिफोर ऑडिशनिंग. So I had already told them I don't have dates, so I can't even audition. So it's not like they had selected me or anything. Nimrat's the one who got selected. I mean, it's a prestige show. मुझे मिलता तो मैं दुनिया इधर से उधर कर देता उसके लिए. Second thing is Broadway is something I was very interested in. I had read a few scripts. I was supposed to do something, but that was not Broadway. Yes, it was on the national stage. I mean, in London, at the national. I don't remember which theater, but it was a big production there, and I couldn't do that because of mm. dates. Do you think it is worth it for a celebrity like you to say what you want to say openly on social media? You're right. Sometimes I do think, is it now? We're all living worried कि भाई को मुंह से कुछ गलत निकल गया और उसका कुछ और मीनिंग निकल आए और कोई कहीं बैठ के उसको उछाल दे और आप फिर बस भाग रहे हैं अपनी इज्जत बचाते हुए. And here we are trying to just be artists. We're trying to hopefully create questions and raise questions through our art. मैंने एक छोटी सी एक वो शॉर्ट फिल्म की थी. मैं आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. आई एम सो प्राउड ऑफ इट. आई थिंक मैंने कितना काम किया है लाइफ में, बट it boiled down to the 3-minute piece which I'm so most proud of, and आशुतोष पाठक ने बनाई थी. and it's on जो हमारी हालत है एज अ सोसाइटी कि आज के दिन हम पैंडेमिक में जूझ रहे हैं अभी भी, लेकिन उसकी बातें नहीं हो रही हैं. हमारी इकोनॉमी डाउन है, गुर्बत है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं. हम लोग जो कर सकते हैं जब जब भी कुछ होता है वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू डू आवर लिटिल बेस्ट. मुझसे चर्चा नहीं की जाती कि भाई मैंने ना यहाँ पे इतना डाला, यहाँ उतना डाला. जो भी हो सकता है मैंने अपनी तरफ से किया है. तो अब वो आई डोंट नो but sometimes you want to speak out for so many things and you can't. And I suppose we'll find a better time for it. I think we're going through that churning as an entire society where we're trying to also figure out what is driving us right now, right? Is it TRPs? Is it the fake news, the fake photos, the fake uh, narratives, or what is real, what is not? For every opinion there's another opinion that is totally opposite, and then you can just spend all your time debating it. Tomorrow Definitely, put this definitely. out and somebody might have a totally different take on our interview. Right. Now, Richa has come up with this entire step of a legal suit, and a lot of people they are appreciating her for taking a step. Um, but there are a lot of actors whose names have been dragged, but they're completely silent. How do you look at this entire phenomenon that actors they tend to be soft targets? Very few, like Richa, for example, they stand up for themselves. A lot of them they don't. They're not able to, maybe just because they're advised in a certain manner. How do you look at this particular situation? I just see it as
you know, we've just worked hard for our reputations. You know, we've worked hard, we've really worked, and we're the same people. You know, आज की डेट में मैं किसी को बता रहा था ना कि even during the pandemic ना हमने the word migrant labor कितना मतलब पॉश साउंड करता है ना, ये हम ही तो हैं, ये हम लोग हैं, हमारे वर्कर्स हैं ये लोग, हम भी बाहर से आए काम करने आए हैं. We are from middle class families, you know, lower middle class families, or maybe even, you know, down from all kinds of stratas of society. We've all come to just find work and make money and just, you know, eat bread, feed our families. यहाँ कोई ऐसे मतलब वो लड़ने नहीं आया है कि या किसी को कोई नीचे गिराने आया है. So yeah, you know, I think of course each to his own. I totally support what Richa is doing, and she's obviously I'll always champion her. And yeah, I've learned a lot from her. In fact, I think yeah, she leads by example, not just for me, but for a lot of artists, I think, and for upcoming people also. I think as a society, we have a lot to learn from a lot of such artists who are able to speak and who are able to articulate in a very, not a rude way, and a very, you know, how do I say, helpful manner. We've taken a few comments on YouTube trailer of season 2, Mirzapur season 2 trailer, गालियों and की let's see बौछार what. होगी उसमें. Okay, this is Amol Pardesi. विलन दिखाया मुन्ना को, लेकिन सबसे ज्यादा गालियां देता है गुड्डू. इंडियन कंटेंट इज रियली चेंजिंग. ये जो हीरो और विलन का कॉन्सेप्ट है, डू यू थिंक दैट इट्स अ बिट टू स्टीरियोटिपिकल? Yeah, it is. I mean, I think now, you know, even in Mirzapur for that matter, all characters are grey. Yeah? You know, you're not, if somebody is rooting for a Exactly. Munna, you know, then he's probably not liking a Guddu, and somebody is rooting for Guddu and he's not a, you know, but I feel, and all of these characters, you know, they have an innocence, and that innocence is something that's the human condition. वो हर जगह पाएंगे, वो कितने हर तरीके के लोग होते हैं. तो yes, yeah, that villain and hero thing is a bit, वो खत्म हो गया है. मतलब वो हर चीज, you know, हर चीज की एक, हर आदमी की एक अपनी वो है, प्रॉब्लम है. उस प्रॉब्लम में वो अपना जूझ रहा है और ही इज ट्राइंग टू सर्वाइव. वो पैसे कमाना चाह रहा है किसी तरीके से और अपनी स्टेटस अपने एरिया में बढ़ रहा है. अब वो चाहे गैंगस्टर है या वो नेता है या कोई मतलब, you know, I don't know, बैंकर हो या लॉयर हो, जो भी हो. राइट. जो कुलभूषण खरबंदा से भी जो एक कॉन्फ्रंटेशन सीन था गुड्डू का, मुझे बस इतना याद, बहुत फनी हुआ था. वो सर जो थे ना, वो उस पे चेयर पे चलते हैं ना, रिमोट कंट्रोल उनका एक आता है, वो व्हील चेयर. तो वो एवरी टाइम आई यूज्ड टू टेक दैट टेक, और सर को उस पे एंट्री करनी थी. अब वो रिमोट कंट्रोल्ड है, वो साला रिमोट जॉयस्टिक था ना, वो टेढ़ा था. तो कुलभूषण सर आते थे और घूम जाते थे ऐसे 360. तो चेयर ऐसे सट यूं ही होने लगती थी और मैं डायलॉग ले रहा हूँ तो सब उल्टा हो जाता था. तो हम लोग को कम से कम 7-8 दफा किया होगा वो डायलॉग मैंने, क्योंकि सर का एंट्री जो था सब उल्टा हो रहा था. Not because it was not him, it was just the chair that was wrong, which is really funny. Okay, सुल्तान एडी का कमेंट है कि अली फजल का लुक जस्ट वाओ, एकदम डॉन के प्राण की याद आ गई, ये मजा आएगा सीजन में. अच्छा, तो ये प्राण से कंपेयर कर रहे हैं तो डॉन में बच्चन साहब है. साला बच्चन बोल देता है यार, मतलब because the crutch and all. Yeah, I think that's why. Yeah, because of the crutch and because of the crutch. Interesting, भाई. I hope it's only because of the crutch. I think प्राण साहब का वो कैरेक्टर जबरदस्त था. But बहुत जबरदस्त था. हाँ, बहुत जबरदस्त था. Okay, इमरान देसी बॉय, बेचारा गुड्डू बहुत शरीफ आदमी है, एक भी हॉट सीन नहीं नसीब में. हाँ, गुड्डू थोड़ा सा भागता है इस सब से. Maybe Ali. I don't know. But I think even his relationship with Sweetie, for example, he's a completely different person with her. Yeah, very different. और ऐसे होता है, मतलब हम तो लोग बदल जाते हैं, पूरी आपकी सारा सब कुछ बदल जाता है. लड़की के सामने सब निकल आता है, सारी पोएट्री याद आ जाती है और
सारे अच्छे अच्छे गाने याद आ जाते हैं और या तो कुछ नहीं याद आता, बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, आपकी सारी ऐंठ निकल जाती है जिसको कहते हैं। अब तो यूपी में जो है आज के टाइम पे रोमांस में सिर्फ आलू आलू पैटीज ही चल रही है। हाँ, ये सुनने में ही आया है, आलू पैटीज और सोडा बहुत फेमस हो गया है। इट्स द गो टू फूड, सस्ता और Go टिकाऊ। to food. Okay, this is Priya Banasi. I'm here only for Ali Fazal. Series is awesome, but why so much abuse यार? मम्मी पापा के साथ देख ही नहीं सकते, इनको एक सेंसर वर्जन भी बनाना चाहिए। प्रिया को मैं सिर्फ कहना चाहूंगा, I'm सॉरी यार, ऑनेस्टली मैं और क्या बोलूं इसके आगे। ये गुरमीत उर्मीत जो पुनीत कृष्णा है ना, ये लिखते हैं, इनके दिमाग में जाके मुझे ना कुछ चीजें सेंसर करनी पड़ेगी। लेकिन इस दफा थोड़ी कम मैंने गालियां बकी हैं, तो शायद माफ कर दो तुम मुझे। Okay, Kumud Bhasin, J Bas Mirzapur 2 belongs to only Guddu Bhaiya. नो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा कहर है गुड्डू भैया का, वो आपको देखने को मिलेगा। देखते क्या होता है। अब Anushka MSDN, I don't care what the climax will be. I just want Guddu, Munna and Kaleen both alive in the end. बाकी सबको मार दो चलेगा। ठीक है, कर दिया जाएगा, ऐसे ही कर देंगे। डन। How often are you asked to speak like Guddu? All the time. I keep telling them don't do that. मैं तो मतलब उस वक्त वो स्पेस में उसकी एक अच्छी सी फ्लेवर रहती है। अब यहाँ बाल मेरे यहाँ तक आ गए हैं, जुल्फे, और मैं कम हो गया हूँ साइज, फिर मैं बोलूँ गुड्डू की तरह तो लगता है इसे कुछ। Winner Pete, hit like if you also think Ali Fazal is the most underrated actor in India. He deserves much better. अरे यार, so sweet. I mean, I really get flattered when people say that. That's kind, but I'm very satisfied and I'm very happy with what God's grace जो भी आ रहा है, तो मैं ऐसा, but actor हूँ तो I'll always be hungry. मतलब we're always looking for good stuff, good work. So Sweetie या बबलू सीजन 1 में जाके कौन से एक कैरेक्टर को आप बचाना चाहोगे? Sweetie, क्योंकि वो she was also pregnant. There are two lives there. गुड्डू की लाइफ का की सबसे बड़ी गलती? Involving his brother and his marrying his wife in turn, in all the bullshit that he was doing, to wanting to become cool, gun savvy and all that. ऐसी एक चीज जो अली फजल ने शुरू मजबूरी में की थी लेकिन अब उन्हें मजा आ रहा है। एक्टिंग एक्चुअली मैं बास्केटबॉल प्लेयर था, मैं हॉकी और बास्केटबॉल खेलता था। मेरा हाथ टूट गया था स्कूल में, तो मुझे मतलब बताया गया था कि तू एक्टिंग कर और डिबेटिंग से अपना टाइम निकाल, तो इसलिए मैंने शुरू की थी। वो ना फिर चस्का चढ़ गया मुझे। so okay. एक ऐसी चीज जो गुड्डू बहुत आसानी से कर सकता है, यू विश यू कुड डू दैट सो इजीली। गालियां बहुत आसानी से दे सकता है वो, क्योंकि मैं नहीं दे पाता हूँ। बहुत मतलब फर्राटे ऐसे ऐसे इतना इतना मक्खन जैसे, वो मुझसे नहीं हो पाता रियल लाइफ में। ओके, जैसे डायलॉग इन मिर्जापुर, लाइफ हो तो ऐसी वरना जिंदगी तो बीप बीप। लास्ट टाइम किस सेलिब्रिटी को देख के आपको ऐसा लगा था? अरे शाहरुख खान यार, शाहरुख खान ऑल द वे। Oh yeah, totally. Okay, if you meet these Mirzapur characters for real, what would you say to them? Beena Tripathi. You are stronger than you think you are. Kaleen Bhaiya. थोड़ा हंस लीजिए, थोड़ा और मजाक करिए, हंसिए और इसको हटाइए अपने बेटे को। अच्छा, tell me something. Does Guddu in a way try to emulate Kaleen Bhaiya? In many ways, yes. Okay, Guddu Pandit. I don't know what to tell Guddu. It's the most complex character that I've probably played. Slow down. Okay, Munna Bhaiya. If you meet Munna Bhaiya, what would you tell him? थोड़ा लगाम रखें, मतलब
कुछ चीजों पे. Okay, one tip that Ali Fazal would like to give to Guddu Pandit of Mirzapur season 2. There is somebody who loves you. There'll always be somebody who loves you. You're not alone. All right. Which Bollywood don or gangster can help Guddu in his mission? Oh, I mean, Don himself. Don himself, like Shah Rukh or Mr. Bachchan? बच्चन साहब अभी नहीं है, उनको मैं बॉदर नहीं करूंगा. कोविड टाइम्स हैं, थोड़ी सी एज भी हो गई है, तो आई थिंक Shah Rukh. we can do it Shah Rukh Khan. Sure. Okay, if a movie was to be made on Guddu Pandit's character, what would be its title? यही सवाल है कि हम बवाल हैं. हाँ, हम गुड्डू हैं, हम कोई पुद्दू नहीं है. Yeah, something like that. Okay, all right, this is Bawal best. Okay, following are some famous dialogues in Mirzapur. We have removed the abusive words from it. How would you rephrase that abusive part so that it sounds innocuous, yet the meaning doesn't change? जिंदगी हो तो ऐसी, वरना जिंदा तो बीप बीप बीप. जिंदा तो घुंघराले बाल भी हैं. अरे वाह. मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं. डॉट डॉट डॉट. मिडिल क्लास आदमी आदमी नहीं, सड़ियल होता है. चाचा ओ डॉट 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 चाचा. भिवंडी वाले चाचा. ओके, ऑलराइट. ट्रू और फॉल्स? अब गुड्डू भैया इतना गुस्सा है कि वो कालीन भैया को भी मार सकते हैं. हाँ, ट्रू. स्वीटी के बाद अब गुड्डू भैया किसी और लड़की से प्यार नहीं कर पाएंगे. ट्रू. मिर्जापुर इज माई बेस्ट एवर परफॉर्मेंस सो फार. फॉल्स. If Mirzapur was entertaining, Mirzapur 2 will be super entertaining. Hopefully true. People will love my character more in Mirzapur season 2. Again, hopefully true. I really honestly, you're asking Hopefully the actor what to think of his own character to be liked or not.